CBSE Mathematics Class 11th, Chapter 14, Exercise 14.5. Question number 1. So that the statement P such that if x is a real number such that x cube plus 4x is equal to 0, then x is 0 is true by direct method, second method of contradiction, method of contrapositive. तीन मेथड से हमें शो करना है कि x इज 0 इज ट्रू. देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या है, p सच दैट x इज ए रियल नंबर सच दैट x क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 0, q x इज इक्वल टू 0. अब डायरेक्ट मेथड है क्या चीज़, if p is true then q is true. This is known as direct method. Now p x cube plus 4x is equal to 0, q x is equal to 0. At x is equal to 0, find out the value of p here. Therefore the p is equal to 0 का क्यूब किया plus 4 into 0, that is equal to 0 plus 0, it is 0. Hence it is true because x is equal to 0. Now the same thing by method of contradiction. Method of contradiction. P is such that x is a real number such that x cube plus 4x is equal to 0. q x is not 0. क्योंकि कंट्राडिक्शन है तो हमने x इज इक्वल टू 0. देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ 0, लेकिन हमने क्या किया, x इज नॉट 0. कंट्राडिक्शन टू द गिवन कंडीशन. तो p इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0. सो हियर यू सी फैक्टराइज कर दिया हमने, x कॉमन ले लिया तो x इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4. अभी देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर -4. किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर -4 नहीं आना चाहिए रियल नंबर में. सो रॉन्ग कंक्लूजन आया हमारे को. देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग बिकॉज आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग. हेंस सो द q इज 0, दैट इज मैंने x इज इक्वल टू 0. हेंस प्रूव्ड. Now the contrapositive, q is implies to 0, so negation of q implies negation of p. By contrapositive method में अगर negation of q implies negation of p, here therefore the p implies that x cube plus 4x equal to 0. So negation of p will be equal to x cube plus 4x is not equal to 0. Negation of q, that is x is not equal to 0. अभी यहाँ पर देखिए इन सभी से क्या इम्प्लाइज करता है, x कॉमन ले लिया और x स्क्वायर प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट इज प्रूव्ड अगेन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. So that the statement for any real number a and b, a square is equal to b square implies that a is equal to b is not true. ध्यान दीजिए ये इम्पॉर्टेंट है. a is equal to b is not true by giving the counter example. हम एग्जाम्पल से इसको प्रूव करेंगे. गिवन है a and b belongs to real number such that a square is equal to b square. अब implies क्या करता है, a is not equal to b because a is equal to b is not true. ये हमारे को बता रहा है कि a इज इक्वल टू b इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया, a इज नॉट इक्वल टू b. So P such that for any real number A and B,
a square is equal to b square. Q a is equal to b is not true, that is a is not equal to b. एग्जाम्पल क्राइटेरिया के लिए लेते हैं. लेट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -4. सो a का स्क्वायर किया 4 का स्क्वायर, b के लिए -4 का स्क्वायर किया. इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग 16. सो हेंस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, बट a इज नॉट इक्वल टू b. क्यों? एक 4 है, a 4 है और b को हमने -4 लिया. देखिए a 4 b -4. So here a is not equal to b. Now second case में a is equal to -3, b is equal to 3. तो देखिए -3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया. In both the cases we are getting 9. So a square is equal to b square, but a is not equal to b because a is -3 and b is 3. So -3 is not equal to 3. Now come to the question number 3. So that the following statement is true by the method of contrapositive. P such that if x is an integer and x square is even, then x is also even. According to the contrapositive, if P implies Q, then negation of Q implies negation of P. P such that if x is an integer and x square is even, Q such that x is even number. By contrapositive, negation of Q such that x is not an even number. So let x is equal to 2n plus 1, odd number ले लिया, where n की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1. टेकिंग आउट 2n कॉमन फ्रॉम 4n स्क्वायर अराउंड, मीन्स फर्स्ट और सेकेंड टर्म से हमने 2n कॉमन ले लिया. नाउ इट विल बी इक्वल टू 2n इन ब्रैकेट में 2n plus 2 plus 1. से 2n plus 2 is equal to k. मान लीजिए जो ब्रैकेट में है वो k के बराबर है. Therefore the x square will be equal to 2nk plus 1. Again it is in the form of odd number. So it is odd number, hence proved the x square is also odd. Now come to the question number 4. By giving a counter example, show that the following statements are true or not true. P such that if all the angles of a triangle are equal, then the triangle is obtuse angle triangle. Second जो example है, second part जो है, Q such that the equation x square minus 1 equal to 0 does not have a root lying between 0 and 2. Solution क्या होगा इसका? P such that all the angles of a triangle are equal, then the triangle is an obtuse angle triangle. P such that if all angles of a triangle are equal, Q the triangle is obtuse angle triangle. अब हमारे को मालूम है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो हियर ऑल एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ईच एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 60 डिग्री. 60 डिग्री इज नॉट ऑब्ट्यूज एंगल, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. नाउ द सेकेंड केस, सेकेंड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. Let M a statement such that equation x square minus 1 is 0 or n the roots does not lie between 0 and 2. अब देखिए एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सेकेंड स्टेटमेंट है रूट्स
root does not lie between 0 and 2. X square minus 1 is equal to 0, so x square is equal to 1, x is equal to 1 and x is equal to minus 1. Here x is equal to 1 is in between 0 and 2 and x is equal to minus 1 does not lie between 0 and 2. Hence the given statement is false. अब यहाँ पर देखिए, अगर एक तो माइनस 1 है, एक माइनस 1 है और एक 1 है. 1 तो एग्जिस्ट करता है 0 और 2 के बीच में है, लेकिन माइनस 1 नहीं है. नंबर लाइन पर देखेंगे माइनस 1. और यहाँ पर क्या है, और से जब भी कनेक्टेड होगा बोथ शुड बी करेक्ट, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज ट्रू. बट one is true and other is false, therefore the given statement is false. Now come to the question number 5. Which of the following statements are true and which are false? In each case, give a valid reason for saying so. P such that each radius of the circle is a chord of the circle. False. Reason क्या होगा? Chord intersect the circle at 2 points. Second क्या है? Q. The center of the circle bisect each chord of the circle. False. Reason क्या है? The center of the circle bisect the largest chord, that is diameter only. Each chord is not a diameter. Third है, or such that circle is a particular case of an ellipse. और ये ट्रू है. क्यों? रीज़न क्या है? इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और पर्टिकुलर केस के लिए क्या होगा? इफ पुट ए इज इक्वल टू बी इन ए पर्टिकुलर केस के लिए वी गेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल. Now the fourth part, as if x and y are integer such that x is greater than y, then negative minus x is less than minus y. अब ये क्यों हुआ है? बाई रूल ऑफ इनइक्वलिटी. जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल बी रिवर्स्ड. रीजन हो गया बाय द रूल ऑफ इनइक्वलिटी. ये ट्रू हो गया. नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट, दैट इज टी सच दैट रूट 11 इज अ रेशनल नंबर. फॉल्स. रीजन क्या होगा? 11 इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर रूट 11 इज एन इरेशनल नंबर. दैट्स ऑल.